Vitellina centripunctata, present in small intestine of sheep, goat and cattle. Vitellina centripunctata, 2 to 3 meters long, scolex unarmed, distinct neck. Present in small intestine of sheep, goat and cattle, 2 to 3 meter long, scolex unarmed, distinct neck. Mature में proglotid segmentation is not distinct. Mature में proglotid segmentation is not distinct. There is one set of genital organs alternating in irregular fashion. Present in small intestine of sheep, goat, cattle, 2 to 3 meter long, scolex unarmed, distinct neck. In mature proglotid segmentation is not distinct. There is one set of genital organs alternating in irregular fashion. There is one set of genital organs. There is one set of genital organ alternating in irregular fashion. Vitelline glands are absent. Ovaries spherically located to the side where genital pores situated. Ovary क्या है? Spherically located है to the side where genital pores is situated. Testes on either side of excretory canal. Testes क्या है? Either side of excretory canal. Uterus is like transverse sac. Uterus कैसा है? Transverse sac की तरह. Present कहाँ है? Small intestine of sheep, goat, cattle, 2 to 3 meter long, scolex unarmed, distinct neck, mature proglotid segmentation is not distinct. One set of genital organ alternating in irregular fashion. Vitelline glands are absent. Ovary is spherically located to the side where genital pores are situated. Testes on either side of excretory canal. Uterus is transverse sac. It's like transverse sac. Species Vitellina centripunctata. In each gravid proglottid there is one par uterine organ filled with eggs. ग्रेविड प्रोग्लोटिड में एक वन पार यूट्राइन ऑर्गन है जिसके अंदर filled with eggs. Posterior part of strobila shows one white band. Posterior part of strobila क्या शो करता है? One white band in the center, which is formed due to the series of periuterine organs. Posterior part of strobila shows one white band. Posterior part of strobila shows one white band in the center, which is formed due to series of periuterine organs. Egg have no piriform apparatus. Posterior part of strobila show one white band in center, which is formed due to series of periuterine organs. Vitellina centripunctata. Vitellina centripunctata. Life cycle not known. Differential species of saucids. Different species of saucids. Bark lice, book lice, dust lice act as intermediary host. Different species of saucids. Bark lice, book lice. In each gravid proglottid there is one periuterine organ filled with eggs. Posterior part of strobila show one white band in the center, which is formed due to the series of periuterine organ. Egg have no piriform apparatus. एग के अंदर कोई भी पायरिफॉर्म apparatus नहीं है. Stilacia. Hepatica 50 cm long, occur in the bile duct. Globipunctata present in small intestine of sheep, goat, cattle, other ruminants. Scolex unarmed, distinct neck. Strobila is very thin and membranous. Morphologically resembles a vitellina. Hepatica क्या है? 50 cm लॉन्ग है, अक्कर करता है बाइल डक्ट में. Globipunctata किसमें प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप, गोट, कैटल.
स्कॉलेक्स अनआर्म्ड है, डिस्टिंक्ट नेक है। स्ट्रोबिला वेरी थिन, मेम्ब्रेनस, मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल करता है विटेलिना में। विटेलाइन ग्लैंड्स एब्सेंट है। जेनिटल पोर अल्टरनेट इरेगुलरली। Genital pore is alternates irregularly. Testes located on either side of excretory canal. Testes कहाँ located है? Either side of excretory canal. Uterus कैसा है? Double shaped. Gravid proglotid contains two periuterine organs. Gravid proglotid के अंदर क्या है? दो periuterine organs हैं. Then आता है Steracia. Steracia में क्या है? Life cycle. Orbited mites as intermediate host. Orbited mites क्या है? As intermediary host. हेलिकोप्टेरा गियार्डी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है शीप, गोट और कैटल के 2 मीटर्स। स्कॉलेक्स अनआर्म्ड, डिस्टिंक्ट नेक, एक सेट ऑफ जेनिटल ऑर्गन इन ईच सेगमेंट। टेस्ट इज लेटरल टू द excretory canal. The side of segment which contains the serous sac bulges out, thus giving the margin an irregular appearance. किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप, गोट एंड कैटल 2 मीटर। स्कॉलेक्स अनआर्म्ड होता है, डिस्टिंक्ट नेक होती है, एक सेट ऑफ जेनिटल ऑर्गन इन ईच सेगमेंट। किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप, गोट एंड कैटल 2 मीटर। स्कॉलेक्स अनआर्म्ड, डिस्टिंक्ट नेक, one set of genital organs. Test is lateral to the excretory canal. Side of segment contains serous sac, bulges out, giving the margin of irregular appearance. Life cycle not exactly known, but orbited mite may act as intermediary host. Pathogenesis of tapeworm in ruminants. Among these tapeworm, Meningia species are most pathogenic. ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक Meningia है. Lamb, kid, calves under 6 months of age are most susceptible group. Lamb, kid और calves क्या है? More susceptible group है. Pathogenesis is mainly attributed to 3 factors. Pathogenesis mainly attributed है 3 factors में. Malnourishment, toxic excretion, secretion, mechanical obstruction. Malnourishment, toxic excretion and secretion, and mechanical obstruction. Pathogenesis. Malnourishment. Majority of tapeworm are quite long, about 1 to 5 meters, and may cover the entire intestinal mucosa. Majority of tapeworm क्या है? बहुत लंबे हैं, ठीक है, 1 से 5 मीटर, और क्या है? may cover entire intestinal mucosa. पूरा का पूरा intestinal mucosa को क्या है? कवर कर सकते हैं. And there is severe malnourishment, ठीक है. Majority of tapeworm क्या है? Quite long है, 1 से 5 मीटर, and they may cover the entire intestinal mucosa. So there is several malnourishment. The toxic excretion and secretion. So releases metabolites or biochemical which leads to poor muscular development. तो ये क्या रिलीज करते हैं? मेटाबोलाइट्स रिलीज करते हैं और बायोकेमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या है? पुअर मसल डेवलपमेंट होता है, ठीक है. तो माल नरिशमेंट के मेजॉरिटी ऑफ टेपफॉर्म बहुत लंबे होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ टेपफॉर्म क्या है? क्वाइट लॉन्ग है, अबाउट 1 to 5 meters, और may cover entire intestinal mucosa. मेजॉरिटी ऑफ टेपफॉर्म क्या है? क्वाइट लॉन्ग है, 1 to 5 meters, और may cover the entire intestinal mucosa. कवर करते हैं entire. There is severe malnourishment. Toxic accretion and secretion release metabolites or biochemicals which leads to poor muscular development. क्या रिलीज करते हैं? मेटाबोलाइट्स और बायोकेमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या है? पुअर मसल डेवलपमेंट होती है, पर्टिकुलरली इन काव्स, किड्स एंड लैब. मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है? व्हेन दे आर इन लार्ज नंबर दे मे ओक्लूड
इंटेस्टिनल ल्यूमन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में जब वो लार्ज नंबर में होते हैं दे में ऑक्लूड इंटेस्टिनल ल्यूमन। मेजॉरिटी ऑफ टैपवर्म लंबे होते हैं, मालनरिशमेंट होती है, मेटाबोलाइट रिलीज करते हैं और पुअर मस्कुलर डेवलपमेंट करते हैं काव्स, किड्स और लैम्स में। जब लार्ज नंबर में होता है तो दे में ऑक्लूड द इंटेस्टिनल ल्यूमन। सिम्टम्स इसमें क्या है? डायरिया, अनथ्रिफ्टीनेस, वूल मीट प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, ऑक्लूजन एंड थिकनिंग ऑफ बाइल डक्ट इन हेपेटिका, सीरियस हेपेटिका, ऑक्लूजन एंड थिकनिंग हो जाती है बाइल डक्ट की। नोड्यूल फॉर्मेशन इन म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में नोड्यूल बन जाता है, स्क्लोबी पंक्टाटा। Diagnosis by stool sample examination with detection of egg, gravid proglotid resemble cooked rice grain in the ficus। जो gravid proglotid है वो cooked rice की तरह दिखते हैं ficus में। ट्रीटमेंट में ओल्ड ट्रीटमेंट 1% CuSO4 देते हैं 10 से 100 सेंटीमीटर क्यूब पर एनिमल। CuSO4 प्लस टोबैको एक्सट्रैक्ट देते हैं 30 ग्राम टोबैको लीव्स देते हैं 5 लीटर पानी में। सस्पेंशन बहुत बॉइल्ड होता है, फिल्टर्ड होता है, उसको ऑर्डिनरी क्लोथ के थ्रू पास आउट करते हैं। तो उसमें 30 ग्राम CuSO4 ऐड करते हैं। दिस शुड बी गिवन एट 100 to 30 ml पर एनिमल। एक्सट्रैक्ट बनाते हैं CuSO4 का और टोबैको एक्सट्रैक्ट का मिक्सचर ऑफ 1 CuSO4 and 1% nicotine sulfate, 1% sodium arsenate, mixture 1 plus CuSO4, 1 plus nicotine sulfate and 1% sodium arsenate. This is given at the rate of 6 to 20 ml per sheep and goat and at the rate 60 ml per cattle and buffalo. Treatment: commercially available medicine mebendazole at the rate 50 mg per kg body weight, fenbendazole 5 mg per kg body weight, albendazole 15 mg per kg body weight, niclosamide 75 mg per kg body weight, biothianine at the rate 20 mg per kg body weight. Commercially available medicine mebendazole 50 mg, fenbendazole 5 mg, albendazole 15 mg, niclosamide 75 mg and biothianine 200 mg. Drug of choice praziquantel at the rate 15 mg per kg body weight. कंट्रोल में वही पास्चर स्पेलिंग करनी है और वेटेड माइट प्रेजेंट होते हैं अर्ली मॉर्निंग में ग्लास प्लेट पे, तो अर्ली मॉर्निंग में ग्रेजिंग मत करो। फिर लेवल ऑफ इन्फेक्टेड माइट ऑन पास्चर कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्लफिंग एंड रीसीडिंग द पास्चर। जो लेवल है इन्फेक्टेड माइट का उसको हम वो कर सकते हैं प्लफिंग करके, दोबारा खोद के। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड फॉर माइट कंट्रोल, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड माइट कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं माइट कंट्रोल के लिए, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स।